What was the name of the old couple's pet dog? बुजुर्ग दंपत्ति के पालतू कुत्ते का नाम क्या था? ऑप्शन इज ए मुको, बी टारो, सी हाची, डी कुमा। आंसर इज ऑप्शन ए मुको। How did the old couple treat their dog? बुजुर्ग दंपत्ति अपने कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करते थे? ऑप्शन इज ए फेड वेल, अच्छा खाना खिलाया, बी इग्नोर्ड इट, उसे नजरअंदाज किया, सी स्कोल्डेड इट, उसे डांटा, डी नेग्लेक्टेड इट, उसकी उपेक्षा की। आंसर इज ऑप्शन अ फेड वेल, अच्छा खाना खिलाया। What did the dog discover in the ground? कुत्ते को जमीन में क्या मिला? ऑप्शन इज ए bones, बी gold, सी stones, डी dirt। आंसर इज ऑप्शन बी gold। What did the wicked neighbors hope to find with the dog's help? दुष्ट पड़ोसियों को कुत्ते की मदद से क्या मिलने की उम्मीद थी? ऑप्शन इज ए treasure, बी gems, सी food, डी toys। Answer is option A, treasure. What did the wicked neighbors hope to find with the dog's help? दुष्ट पड़ोसियों को कुत्ते की मदद से क्या मिलने की उम्मीद थी? ऑप्शन इज ए treasure, बी gems, सी food, डी gold। Answer is option A, treasure। How did the dog spirit communicate with the old man? कुत्ते की आत्मा ने बूढ़े आदमी से कैसे संवाद किया? ऑप्शन इज ए लेटर, बी ईमेल, सी फोन, डी ड्रीम। Sorry, we don't know the answer. If you know the answer, then comment the answer in comment box. What did the dog spirit instruct the old man to make from the pine tree? कुत्ते की आत्मा ने बूढ़े आदमी को देवदार के पेड़ से क्या बनाने का निर्देश दिया? ऑप्शन इज ए कप एंड ट्रे, बी बास्केट एंड एक्स, टोकरी और कुल्हाड़ी, सी मोटर एंड मिल, ओखली और चक्की, डी हैमर एंड चिजल, हथौड़ा और छेनी। आंसर इज ऑप्शन सी मोटर एंड मिल, ओखली और चक्की। What happened when the greedy neighbors used the borrowed items? जब लालची पड़ोसियों ने उधार ली गई चीजों का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? ऑप्शन इज ए turned into gold, सोना बन गया, बी turned into worms, कीड़े बन गए, सी turned into stones, पत्थर बन गए, डी turned into flowers, फूल बन गए। Answer is option B, turned into worms, कीड़े बन गए। What did the dog spirit instruct the old man to do with the ashes? कुत्ते की आत्मा ने बूढ़े आदमी को राख के साथ क्या करने का निर्देश दिया? ऑप्शन इज ए स्प्रिंकल ऑन ट्रीज, पेड़ों पर छिड़कना, बी थ्रो इन रिवर, नदी में फेंकना, सी बर्न इन फायर, आग में जलाना, डी बरी इन ग्राउंड, जमीन में दफनाना। आंसर इज ऑप्शन अ स्प्रिंकल ऑन ट्रीज, पेड़ों पर छिड़कना। How did the cherry tree blossom again? चेरी का पेड़ फिर से कैसे खिल गया? ऑप्शन इज ए ashes sprinkled, बी watered daily, सी prayed over, डी fertilized heavily। Answer is option A, ashes sprinkled। What did the daimyo reward the old man with? डेमियो ने बूढ़े आदमी को क्या इनाम दिया? ऑप्शन इज ए स्पंजी केक, बी वुडन स्टाफ, सी मेटल टूल्स, डी सिल्क रोब्स। Answer is option D, silk robes. What did the greedy neighbor attempt to do with the magic ashes?
लालची पड़ोसी ने जादुई राख से क्या करने की कोशिश की? ऑप्शन इज ए क्रिएट फ्लावर्स, बी कर्स समवन, सी फूल ए डेमियो, डी हील सिकनेस। Answer is option C, Fool a Daimyo. What happened when the greedy neighbor used the ashes? जब लालची पड़ोसी ने राख का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? Option is A. Flowers bloomed, B. Trees grew taller, C. Nothing changed, D. Rain fell heavily. Answer is option C. Nothing changed. How did the daimyo react to the incident with the greedy neighbor? लालची पड़ोसी के साथ हुई घटना पर डेमियो की क्या प्रतिक्रिया थी? ऑप्शन इज ए एंगर, बी लाफ्टर, सी इंडिफरेंस, डी सिंपैथी। Answer is option A, anger. What did the man cry out to the people along the road? सड़क किनारे खड़े लोगों से उस आदमी ने क्या कहा? ऑप्शन इज ए गेट डाउन, बी लुक अप, सी नील डाउन, डी स्टैंड टॉल। आंसर इज ऑप्शन सी नील डाउन। What did the leader of the van do when he saw the old man in the tree? जब वैन के लीडर ने पेड़ पर बूढ़े आदमी को देखा तो उसने क्या किया? ऑप्शन इज A. Invite him, B. Scold him, C. Ignore him, D. Kick him. Answer is option C. Ignore him. How did the daimyo reward the old man? डेमियो ने बूढ़े आदमी को क्या इनाम दिया? ऑप्शन इज A. Spongy cake, B. Silk robes, C. Metal tools, D. Wooden staff. Answer is option B, silk robes. What fate befell the greedy neighbor after his attempt to deceive the daimyo? डेमियो को धोखा देने के प्रयास के बाद लालची पड़ोसी का क्या हश्र हुआ? ऑप्शन इज A. Beating, B. Promotion, C. Reward, D. Forgiveness. Answer is option A. Beating. What did the old man share with his wife upon returning home? घर लौटने पर बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ क्या साझा किया? ऑप्शन इज A. Food, B. Money, C. Joy, D. Clothes. Answer is option C. Joy. What was the ultimate outcome for the kind old man and his wife? दयालु बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी के लिए अंतिम परिणाम क्या था? ऑप्शन इज A. Poverty and hardship, B. Loneliness and despair, C. Fame and fortune, D. Peace and plenty. Answer is option D. Peace and plenty. Fill in the blanks. The old couple's pet dog was named blank. Option is A. Hachi, B. Muko, C. Taro, D. Kuma. Answer is option B. Muko. The old man worked as a blank. Option is A. Fisherman, B. Rice farmer, C. Blacksmith, D. Carpenter. Answer is option B. Rice farmer. The dog found a pile of blank in the ground. Option is A. Gold, B. Stones, C. Bones, D. Dirt. Answer is option A. Gold. The wicked neighbors hoped the dog would find blank for them. Option is A. Jewels, B. Treasure, C. Food, D. Toys.
Answer is option B, treasure. The old man communicated with the dog spirit through blank. Option is A. A letter. B. An email. C. A dream. D. A phone call. Answer is option C. A dream. The dog spirit instructed the old man to make a mortar and mill from a blank tree. Option is A. Cedar. B. Pine. C. Cherry. D. Oak. Answer is option B, pine. The greedy neighbors borrowed the old couple's blank. Option is A. Basket and axe. B. Cup and tray. C. Mortar and mill. D. Hammer and chisel. Answer is option C. Mortar and mill. When the greedy neighbors used the borrowed items, they turned into blank. Option is A. Gold. B. Stones. C. Worms. D. Flowers. Answer is option C. Worms. The dog spirit instructed the old man to sprinkle the ashes on blank. Option is A. The river. B. Withered trees. C. The fire. D. The ground. Answer is option B. Withered trees. The cherry tree blossomed again after the old man sprinkled it with blank. Option is A. Water. B. Ashes. C. Fertilizer. D. Prayers. Answer is option B. Ashes. The daimyo rewarded the old man with blank. Option is A. Silk robes. B. Spongy cake. C. Metal tools. D. Wooden staff. Answer is option A. Silk robes. The greedy neighbor attempted to deceive a blank. Option is A. Daimyo. B. Merchant. C. Priest. D. Farmer. Answer is option A. Daimyo. When the greedy neighbor used the ashes, blank changed. Option is A. Nothing. B. Flowers bloomed. C. Trees grew taller. D. Rain fell heavily. Answer is option A. Nothing. The leader of the van ignored the old man in the tree and continued blank. Option is A. Walking. B. Running. C. Riding. D. Marching. Answer is option D. Marching. The daimyo's procession was interrupted by the actions of the blank neighbor. Option is A. Kind. B. Greedy. C. Generous. D. Answer is option B. Greedy. The old man shared his joy with his blank. Option is A. Neighbor. B. Pet dog. C. Wife. D. Friend. Answer is option C. Wife. The ultimate outcome for the kind old man and his wife was blank. Option is A. Peace and plenty. B. Poverty and hardship. C. Loneliness and despair. D. Fame and fortune. Answer is option A. Peace and plenty. The greedy neighbor's attempt to deceive the daimyo resulted in him being beaten and left for dead in the blank. Option is A. Street. B. Garden.
C. Mud. D. River. Answer is option C. Mud. The old man sprinkled the ashes on the withered cherry tree, causing it to burst into blank. Option is A. Gold. B. Flowers. C. Leaves. D. Fruits. Answer is option B. Flowers. The kind old man and his wife lived to a blank. Option is A. Yellow old age. B. Red old age. C. Blue old age. D. Green old age. Answer is option D. Green old age.